Welcome children. The name of the chapter is From the Window. Chapter 7, Class 4 EVS. This is the continuation of Chapter 6, Omana's Journey. On 16th May morning, Omana started her journey from Gujarat. Then she crossed the state Maharashtra. On 17th May, now the time is 7:30. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. मैं रात भर सो के सुबह उठने से हम लोग पहुंच गए थे मडगांव. मेरे पापा ने बताया हम लोग गोवा स्टेट के अंदर अभी जा रहे हैं. Children, do you know where is Goa state is there? Look at this political map. The red color state is called Goa. The capital of Goa is Panaji. Official language of Goa is Konkani. In area wise, the smallest state of India is Goa. Goa, it is so beautiful. It is green everywhere. Fields with red soil, green crops and hills covered with trees. गोवा देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है. बच्चों, आप लोग नोटिस किया होगा ओमनास फर्स्ट डे जर्नी में बहुत सारा ड्राई एंड ब्राउन फील्ड्स देख रही थी, लेकिन सेकेंड डे जर्नी में गोवा में बहुत सारा ग्रीन फील्ड और बहुत अच्छे सुंदर हिल्स भी देख रही थी. Level crossing. The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and bullock carts with people and goods in them. Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting. There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. A journey by train is very interesting. अभी ओमना लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही थी. बहुत सारा व्हीकल्स देखा. कुछ लोग अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ नहीं करके रखा था, इसलिए बहुत सारा धुआं और आवाज भी आ रही थी. ओमना saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? ओमना बहुत सारा व्हीकल्स देख रही थी लेवल क्रॉस में, और क्या क्या डीजल और पेट्रोल में रन करते हैं. Buses, trucks and tractors run on diesel, while scooters, cars, motorcycles run on petrol. बच्चों, आपको पता है हेवी व्हीकल्स को चलाते हैं डीजल से. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? क्यों इतना ज्यादा धुआं और आवाज आ रही थी लेवल क्रॉसिंग में? Because some people did not switch off the engine of their vehicles even while waiting at the railway crossing. कुछ लोग अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ नहीं किया था लेवल क्रॉसिंग में, इसलिए इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी. Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? People should not cross the railway tracks while the crossing is closed. It is very dangerous. No one should take such a risk. रेलवे क्रॉसिंग क्लोज होने के टाइम बिल्कुल बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए. ये बहुत डेंजरस है. वैसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. Bridges. Later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the moving train changed. Good, 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 good. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. मेरे ट्रेन ने बहुत बड़ा रिवर को क्रॉस करके ब्रिज के ऊपर जा रहा था.
What was the bridge built over? किसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं? The bridge was built over the river. What did you see below the bridge? ब्रिज के नीचे आप लोग क्या देखा था? I saw water and some boats below the bridge. Find out why bridges are made. क्यों bridges बनाते हैं? Bridges help people and vehicles to cross the river. Now the time is 11:30. After breakfast, I climbed onto the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly everything became dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train came on. But outside it was very dark. Somebody said we have entered a tunnel. मेरा ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बुक रीड करना शुरू कर लिया था. बाहर से बहुत अच्छी धूप आ रही थी, लेकिन अचानक पूरे डार्क हो गया. मैंने डरना शुरू कर लिया, लेकिन ट्रेन के अंदर लाइट्स आ गया. लेकिन कोई बोल रहा था हम लोग टनल के अंदर जा रहे हैं. Children, do you know what is a tunnel? A tunnel is dark from outside. It is built inside a mountain. The route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? गोवा से केरला जाने का रास्ता में 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स है. क्यों इतना टनल्स एंड ब्रिजेस है? बिकॉज इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज टू पास थ्रू सी कोस्ट, मेनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स. On 17th May, now the time is 12:15. It is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from Udupi station. We also bought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside has changed again. Now we can see many coconut trees and green fields every day. हमारा लंच के बाद ट्रेन उडुपी स्टेशन पहुंच गई थी. उधर हम लोग इडली वड़ा सब कुछ खरीद लिया था और बाहर देखने में एकदम अभी सीनरी चेंज हो गया. बहुत सारा कोकोनट ट्रीज थी और ग्रीन फील्ड्स. Now Sunil's family is getting off at Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. हमारा पास बैठने वाला सुनील के फैमिली ने कोझिकोड स्टेशन में नीचे उतर गया. उस समय एकदम शाम हो गई थी, 6 बजे. Children, do you know where is Kozhikode station is there? It is in Kerala. So, Omana, now she reached Kerala. From Gujarat to Kerala, Omana's train went through several states of our country. Find out and list which states it's crossed. ओमना ने गुजरात से केरला जाने का रास्ता में बहुत सारा स्टेट्स को क्रॉस किया. कौन से स्टेट्स को क्रॉस किया? फर्स्ट, शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम गुजरात. देन शी क्रॉस्ड द स्टेट महाराष्ट्र. देन गोवा. देन शी क्रॉस्ड द स्टेट कर्नाटका. Lastly, Omana reached the state Kerala. Children, now turn your textbook page number 59. One exercise is there. People in different states speak different languages. Find out in which states these languages are spoken. In Gujarat, the people speak Gujarati. In Maharashtra, the people speak Marathi. In Goa, the people speak Konkani. In Karnataka, the people speak Kannada.
In Kerala, the people speak Malayalam. On 17th May night 9:30 p.m. It is night. We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we have to get off. अभी रात हो गई थी, हम लोग भी अपने सामान पैक करना शुरू कर लिया क्योंकि 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टयम आने वाला है. Tonight we will go to Valliyamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma's village. आज रात को हम लोग वल्लियम्मास घर जाएंगे और कल बस पकड़ के हमारा अम्मुमा का गांव जाएंगे. हमारे बड़ी मम्मी को हमारा लैंग्वेज में वल्लियम्मा बोलते हैं और ग्रैंड मदर को अम्मुमा बोलते हैं. What do you call your grandmother in your language? Or which languages do you speak at your home? What a long journey it has been. We had a lot of fun. बहुत लॉन्ग जर्नी करके हम लोग कोट्टयम पहुंच गए. We will meet you in Ammuma's house tomorrow. Thank you. Bye bye.